और मुझे लगता है कि जिस तरह से केशव महाराज के 2 ओवर रहे हैं, जल्दी ही मुथुसैमी को भी गेंद सौंप सकते हैं कप्तान फाफ डुप्लेसी। इस बीच अगली गेंद नौकिया की और इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ और मिडिल स्टंप पर, लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस वहां पर। रक्षात्मक स्ट्रोक अजिंक्य रहाणे का ठीक पीछे आकर ऑन साइड में खेला मिड ऑन की तरफ, सीधे फील्डर के पास रन लेने का मौका नहीं। 329 रन 3 विकेट पर दूसरे दिन का ये खेल हो रहा है। इस दूसरे टेस्ट मैच का 3 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला है। विशाखापट्टनम में भारत ने पटकनी दी थी दक्षिण अफ्रीका को, 203 रनों की विशाल जीत दर्ज की थी। और इस दूसरे टेस्ट मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन अब तक जुड़ चुकी है भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर। एनरिक नोकिया की अगली गेंद और इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल किया उसे, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। डीप बैकवर्ड स्पिनर पर गेंद जाती हुई महाराज जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे, अच्छी समझबूझ और तालमेल के साथ 2 रन पूरे कर लिए अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने। उन 2 रनों के साथ रहाणे अब पहुंचे 44 पर और भारत का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 331 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये साझेदारी लगातार परेशानी का सबब बनी हुई दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए, उनके कप्तान के लिए, और लगातार मजबूती प्राप्त करती जा रही है ये साझेदारी। अब तक की शायद सबसे बड़ी साझेदारी सुनील देखे, इससे पहले दूसरे विकेट के लिए 138 की साझेदारी हुई थी, तो लगभग उसी के आसपास। इस बीच अगली गेंद और ऑफ मिडिल स्टंप पर थी, जिसे रक्षात्मक ढंग से खेला, कवर पर कोई रन नहीं। 331 इस समय स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय धूप का नामो निशान नहीं है मैदान पर, लेकिन रोशनी पर्याप्त है, किसी तरह का कोई अंदेशा या आशंका नहीं है बारिश की। लेकिन दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में अनुमान व्यक्त किया गया है कि तेज बौछारें पड़ सकती है। कल भी इसी तरह का अनुमान व्यक्त किया गया था मौसम विभाग द्वारा, लेकिन कल वैसा कुछ घटित नहीं हुआ। आज देखना है क्या होता है। इस बीच अगली गेंद और ऑफ मिडिल स्टंप पर हल्के से पुश किया था, शॉर्ट कवर पर रन लेना चाहते थे रहाणे, मना किया विराट कोहली ने, और सही कहा क्योंकि जोखिम भरा हो सकता था। और उसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई नौकिया की, और उस ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 331 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और केशव महाराज ही, इसमें कोई शक नहीं कि गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे कमेंट्री बॉक्स छोर से। लेकिन अब इस ओवर के बाद क्या सामने वाले छोर से, पवेलियन छोर से गेंदबाजी में तब्दीली करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा इस ओवर का, क्योंकि ये ओवर तो केशव महाराज ही करने वाले हैं। Yes, and as Virat Kohli's made it a habit of now, whenever the spinner comes on, he wants to swap the helmet for the cap, so that's why it's just a slight moment, a slight pause in play. We're also seeing Ajinkya Rahane, in fact, being attended to. Seems to be a little bit of cramp. The Indian physio is now in the center. He's massaging the groin of Ajinkya Rahane, so perhaps just a bit of cramp. As Sunil's pointed out, there isn't much sunlight, although just as I speak, the sun's trying to make an appearance. No grey clouds though. I've seen a little bit of blue sky just in the last 10 minutes or so, before which essentially we had a longish period of play without blue sky. It looked grey, it looked dull, and there is a forecast of rain a little after 2 p.m. There was a forecast yesterday as well, which didn't prove to be right. Light does fade, as we have seen, so we'd be looking at a day which hopefully gives us a full 90 overs, and maybe 88 with the change of innings if it does come today at some point. South Africa have a little time to just conference and figure out what their plans would be. They've missed out on the opportunity of getting a wicket in the first hour of play, which often is the diktat in the dressing room when you come out for a new day, try and get the batsmen while they're still finding their feet on a new day's play. But they've gone through another day now where they haven't got as much out of the first hour of play as they would have wanted, as Virat Kohli ambles along towards what would be a 26th test match 100. 93 not out at the moment. Ajinkya Rahane on 44. And it's an important partnership, this, like we did mention, that the recognized batting ends at this point. Ravindra Jadeja is a more than capable batsman, especially in India. Ravichandran Ashwin has, 4 test match hundreds. So, and Ridhiman Saha has no mark with the bat either, but you would think that South Africa would consider themselves into the second half of India's batting at the fall of this wicket. And therefore, this wicket is so very important. India have done well to ensure that this partnership goes deep into not just runs but also time in this game. Keshav Maharaj readies for what would be his third over of the day, and deciding to swap ends today, bowled all his overs from the other end
the pavilion end yesterday. First ball of the over was flighted on leg stump. Virat Kohli whips it to mid-wicket. The outstretched hand of Henrik Nokke means that a single is all that they'll manage. It was nicely played. And once again, Ajinkya Rahane on strike, which means the man at long off is now running in. Kagiso Rabada just trotting into the saving one position at mid-off, conventional mid-off. And nobody at the boundary now. So if Rahane is to force the issue, he'll have to take the risk. Second ball of the over from Maharaj is a good line around about middle stump, and it's defended by Rahane of the bounce to a fielder who's now moved to silly point. So the point Sunil Vaidya was making the ball away from the right-hander. That's happened, and it's been heeded too by Faf du Plessis. Short legs gone to silly point, also one slip in place. Third ball of the over, shorter in length. Rahane not sure whether to go front or back. Eventually just plays it with his hands and manages to help it towards Dean Elgar at short mid-wicket. So just the slip and the silly point, and a man at short mid-wicket that we considered catching. Temba Babuma's at a conventional cover. There's a man at cover point, and there's also a man at short third man. Next ball of the over, slightly shorter in length, and Rahane takes that as an opportunity to go on the back foot and try and push it through Varun Philander at short third man, but it goes straight to Philander, so not the dot ball. Keshav Maharaj has to try and give as few boundary balls as he can. And in this playing 11, as Dilip Singh Upring, our statistician, points out, that everyone has a first-class grid, with the exception, I'll give you some time to try and think of the two players that don't have one. That's cut. The fifth ball of the over is the one that Rahane tried to the previous one, short and wide out.